वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोप्रोसेसर एंड इट्स इंस्ट्रक्शन सेट का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने जो भी इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड डेफिनेशन है या बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका हमने डेफिनेशन स्टडी किया। दैन उसके बाद हमने इंटरप्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका स्टडी किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर है उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next topic of syllabus is the microprocessor architecture and its operation. So first we start with the microprocessor architecture and then we study the operation of this microprocessor architecture. So here figure shows this general architecture of the microprocessor. So it consists of different blocks like accumulator, then ALU, arithmetical logical unit, then interrupt control, and the timing and control circuitry is there. So these are the main four groups in which the architecture of this microprocessor will be divided. Then we'll study one by one. So first we start with the register section of the architecture. So here 8-bit registers are used in this microprocessor, which is parallel in parallel out, that is PIPO registers are there. So there is the input that is from D0 to D7, which is the 8-bit data, that is the input, and this Q0 to Q7, that is the 8-bit output is there in the register. So the data will be a parallel input and it will be a parallel output, and these are the clocks for each of these flip-flop. So here D flip-flop is used. D flip-flop has a one input and a output is there. So suppose for this D7 bit is the input for D flip-flop and Q7 is the output of that flip-flop, and these are the synchronous flip-flops are there. So common clock is given to all the flip-flop. So that is the register which are used in the microprocessor. So these registers are used to store the data and the address in the memory. ठीक है, तो ये रजिस्टर जनरली यूज़ किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए एंड एड्रेसेस स्टोर करने के लिए. सो देर आर 3 types of this register. First one is the temporary register, second type is the general purpose register, third one is the स्पेशल पर्पस रजिस्टर. ठीक है, तो इन तीनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में. ठीक है, सो दिस रजिस्टर कैन बी 8-bit रजिस्टर और 16-bit रजिस्टर. मीन्स यहाँ पे 8-bit डेटा या 16-bit डेटा यहाँ पे सेव हो सकता है. ठीक है, इन दिस रजिस्टर सेक्शन. सेकंड जो यूनिट है दैट इज़ अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. ठीक है, तो इसका हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल स्टडी किया था. तो arithmetic logical unit are used to perform arithmetic as well as logical operation in the microprocessor. So it performs arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication, division and a logical operation like and or XOR. ठीक है, तो ये दो टाइप के ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होते हैं. अरिथमेटिक, सेकंड है लॉजिकल. सो ALU इज़ नॉट अवेलेबल टू द यूज़र. ठीक है, तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सो इट्स अ वर्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द इंटरनल डेटा बस. सो ALU इज़ कंट्रोल बाय द टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट. तो जैसे हमने आर्किटेक्चर में देखा कि ALU इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट. सो इट विल बी कंट्रोल बाय टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट. ओके, एंड दिस ALU इज़ नॉट अवेलेबल टू द यूज़र. सो इट एक्सेप्ट द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी और रजिस्टर. It stores the result of arithmetic and logical operation in register और memory. ठीक है, तो जो ऑपरेंड्स है जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो मेमोरी और रजिस्टर में ऑपरेंड सेव रहेगा. सपोज हमें A+ भी करना है तो ये नंबर इज सेव इन द memory or it can be in the register. So it will accept the operand from that memory or register and performs the operation and store the result
into the register or memory. So that is the ALU. Next block will be the interrupt control. So this block accept the different interrupt request as the input, and when a valid interrupt request is present, it informs the control logic to take the action in response to each signal. तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि इंटरप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो इंटरप्ट एक तरह का रिक्वेस्ट है विच इज़ द इनपुट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वैलिड इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे जो भी कंट्रोल लॉजिक यूज़ होगा, ठीक है। So that control logic take the essential response or the action regarding the each signals of interrupt, and that interrupt will be executed successfully. Fourth block will be the main block, that is timing and control unit. So this is the control section of microprocessor. तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो एक मेन कंट्रोल सेक्शन है माइक्रोप्रोसेसर का, एंड दैट इज़ मेड बाय यूजिंग अ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो इसमें सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्किट। तो ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, इट विल बी कंट्रोल द ऑल द इंटरनल as well as external circuit which are connected to the microprocessor. So that's why timing and control unit is the main block in the microprocessor architecture, and this will be made up of a sequential synchronous logic circuit. So this timing and control block will operate with the reference of clock signal, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए क्लॉक के लिए रिक्वायर रहेगा, ठीक है। सो क्लॉक इज़ नथिंग बट द नैरो स्क्वायर वेव, और इट कैन आल्सो कॉल्ड एज अ पल्सेस. सो दिस एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड जनरेट द माइक्रो स्टेप टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है. तो ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, इट विल एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है. तो इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर का यूज़ होता है, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल एग्जीक्यूट सम स्टेप्स regarding that instruction. So it will also adds the clock inputs or perform the sequencing or synchronization operation. So the synchronization is required for the communication between microprocessor and the output devices, ठीक है. तो जितने भी output devices कनेक्ट होंगे माइक्रोप्रोसेसर के साथ, so the synchronization is needed between that devices and the microprocessor. So there are different status and control signals are used. So the basic operation of microprocessor is regulated by this unit, ठीक है. तो जो भी basic operation है, that is controlling, that is performed by this timing and control unit. So these are the main 4 groups of the microprocessor architecture. Then the next topic of syllabus is the microcomputer system, memory and IO device, means input output devices. So first we'll study the memory and IO device accessing, ठीक है. तो किस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर एक्सेस कर सकता है, ठीक है, या मेमोरी को किस तरह से एक्सेस कर सकता है, तो वो हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज़ द एड्रेस बस. तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि देर आर 3 मेन बसेस इन द माइक्रोप्रोसेसर, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस इज देयर. सो विल स्टडी इन डिटेल. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एड्रेस बस. So the first point is the bus over which CPU sends out the address of the memory location is called as a address bus. तो ये डेफिनेशन है एड्रेस बस का, ठीक है. तो एड्रेस बस जो एक बस है, on that CPU, that is central processing unit of the computer system, send out the address of memory location. तो जो भी memory location है, ठीक है, तो उसका एड्रेस जो रहेगा, यूनिक एड्रेस, that will be a send out on this address bus. So the address bus carries the address of the memory location to be written or the to be read from, ठीक है. तो एड्रेस बस जो रहेगा वो कैरी करेगा मेमोरी लोकेशन का एड्रेस,
दैट कैन बी रिटन मीन्स सेव, ठीक है, क्योंकि डेटा को हम सेव भी कर सकते हैं एंड रीड भी कर सकते हैं। तो ये रीड राइट जो ऑपरेशंस रहेंगे दोनों भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें मेमोरी लोकेशन लगेगा, मेमोरी लोकेशन का बेसिकली एड्रेस। so that will be on the this address bus. So the address bus may consist of 16, 20, 24, 32 parallel signal lines. So if there is an address lines, so that can be 2 raised to n memory location, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस बस का जो साइज़ है वो डिफरेंट है अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर फैमिली के लिए। so that will be a 16, 20, 24 or 32 bit parallel lines address bus is there, okay। so if there is a an address line, so we have the formula to calculate the memory location. So it will be 2 raised to n addresses are there. So here simple architecture of this address bus with the CPU is given. So this address bus which has the AND lines in general form, and the second is the data bus is there, and these two are connected with the CPU, and the input output ports or the memory is connected through this address and data bus to the CPU of a computer. तो यहाँ पे input output ports and memory is that is connected to the CPU, and there are 4 operations are there, means 2 operation is related to memory and the 2 operation is related to the input output device, that is IO device. So memory can be read or write the data into the memory, ठीक है। तो मेमोरी से हम डेटा रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑपरेशन है रिलेटेड टू द मेमोरी, विच आर द मेन ऑपरेशन। सिंपली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी हम डेटा को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेन ऑपरेशन है रिलेटेड टू द मेमोरी एंड आईओ डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा बस है, तो डेटा बस के लिए जो कनेक्शन रहेगा मेमोरी का एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का वो बाई डायरेक्शनल है, बिकॉज वी कैन रीड द डेटा एज वेल एज राइट द डेटा, इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल एरो है यहाँ पे, ठीक है। एंड एड्रेस बस इज अ यूनिडायरेक्शनल, मीन्स CPU can generate the address and send out to the memory or the input output ports, but these input output ports or memory cannot send the address to the CPU, ठीक है, क्योंकि CPU यहाँ पे मेन सिस्टम का ब्रेन है, ठीक है। तो एड्रेस जो जनरेट करेगा मेमोरी लोकेशन, मीन्स किस मेमोरी लोकेशन पे क्या डेटा सेव है, ठीक है, तो ये CPU जनरेट करके देगा यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ unidirectional, but the data bus is a bidirectional, means data can be read or write from the memory or input output devices, because in memory there are different location and each location has a address which is in hexadecimal number of the binary number system. So that is the simply read write signals, that is the pass of a control bus. So here is the size of address line is given. So if n is equal to 16, so the addresses will be a 2 raised to 16, that is 65,536 or 64K, 64,000 memory locations are there, ठीक है। अगर यहाँ पे साइज है एड्रेस लाइन का 16, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मेमोरी लोकेशंस वहाँ पे मेमोरी में है, दैट इज़ द 2 raised to कैपिटल N, ओके। सो 2 raised to 16 इज़ द 65,000, ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पे टेबल दिया है, सपोज 0 है आपका एड्रेस लाइन, सो इट विल 2 raised to 0, दैट इज़ 1 memory location is there. Is suppose 2 lines are there or 2 line address is there, so there are 4 locations in the memory, that is 2 raised to 4, sorry 2 raised to 2 are 4, like that, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली नंबर ऑफ लोकेशंस जो है मेमोरी के कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है, इफ़ अ प्रोसेसर हैज़ अ 24 bit address line, so how many memory locations can access, ठीक है। तो यहाँ पे 24 एड्रेस लाइंस दिया है,
ठीक है। तो कितने लोकेशंस हम मेमोरी के एक्सेस कर सकते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। सो वी हैव द फॉर्मूला 2 कैपिटल N. So here N is the number of address line. So here N is 24. So 2 raised to 24 is there. So it will be divided into 2 raised to 4 as a, and 2 raised to 20 means 20 plus 4, that is 24. So 2 raised to 4 is 16 and 2 raised to 20 is 1 mega. Okay, so it will be a 1 megabyte, that is 16 MB is there. So 60 MB locations or the memory locations can be accessed by using this 24-bit address line. Then the second bus is the data bus. So the data bus consists of 8 16 32-bit parallel lines. ठीक है, तो यहाँ पे डेटा के जो साइज रहेगा, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली देर आर डिफरेंट डेटा बसेस आर अवेलेबल लाइक 8-bit 16-bit 32-bit 64-bit 128-bit like that. So these are the parallel lines. So the data bus is a bidirectional bus. जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में देखा कि जो डेटा बस है दैट इज़ बायडायरेक्शनल टू द मेमोरी एज वेल एज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. ठीक है, बिकॉज डेटा कैन बी अ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, मीन्स डेटा हम रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ अ बायडायरेक्शनल बस. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो. डेटा बस इज ऑलवेज बायडायरेक्शनल. Address bus is unidirectional because address can be generated by the CPU to access the memory. Next point, the data bus can also connect the input output ports and the CPU. So the CPU can write the data to or read the data from the memory or IO ports. ये already हमने आर्किटेक्चर में स्टडी किया है. The number of data lines are used in data bus is equal to the size of data. ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि डेटा बस जो है वो साइज़ ऑफ डेटा पे डिपेंड है. ठीक है, तो जितना साइज़ होगा डेटा का उतना डेटा लाइंस यहाँ पे यूज़ होगा डेटा बस में. सो डेटा कैन बी अ रिटर्न और रीड साइमल्टेनियसली. इस डेटा रीड एंड राइट का जो वर्क रहेगा वो साइमल्टेनियसली डेटा बस में हो सकता है. सो मेनी डिवाइसेस इन द सिस्टम विल कनेक्ट their outputs to the same data bus, but only one device at a time will have its output enabled so that there is no data connection. ठीक है, तो इस तरह से जो डेटा बस है वो वर्क करता है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में. थर्ड टाइप ऑफ बस इज अ कंट्रोल बस. So the control bus is used for sending the control signals to the memory and input output devices. ठीक है, तो कंट्रोल बस का जो यूज़ होता है वो जो कंट्रोल सिग्नल्स है मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सेंड करने के लिए यूज़ होता है. तो सीपीयू सेंड्स द सिग्नल टू द कंट्रोल बस टू अनेबल द आउटपुट ऑफ एड्रेस मेमोरी डिवाइसेस और आईओ पोर्ट डिवाइसेस. तो यहाँ पे सीपीयू जो है वो सिग्नल सेंड करता है कंट्रोल बस को टू अनेबल द आउटपुट्स ऑफ द memory devices or input output devices. So there are 4 control signals are used in this control bus. First one is the memory read, second one is memory write, IO read and IO write. ठीक है, तो जैसे हमने देखा मेमोरी आर्किटेक्चर में कि memory can be connected and the input output devices is also connected to the CPU. So in that there are main 4 operation. Memory can be read or write, input output can be read and write. So that is a simple concept of control bus. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.